एवरीवन, वेलकम टू वंडर कैम्प। एंड लास्ट टाइम हमने किया था असाइलेशन नेमिंग रिएक्शन में। असाइलेशन में हमने किया था एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन, और आज हम करेंगे सेकेंड नेमिंग रिएक्शन दैट इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि हम लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास होता है कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ either acid or base, and that will give us beta hydroxy carbonyl compound. So let me first of all explain carbonyl compounds. Carbonyl compounds हम कौन से लेते हैं? either हम लेंगे एल्डिहाइड या हम लेंगे इसके केस में कीटोन। ओके, व्हाट हैपन, ये होने चाहिए सिमिलर टाइप ऑफ मतलब अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं, वी आर टेकिंग एल्डिहाइड ओनली, दैट टाइम इट शुड बी सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड। अगर हम कीटोन ले रहे हैं, दैट टाइम इट शुड बी सेम टाइप ऑफ कीटोन। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो सेम टाइप ऑफ एल्डिहाइड लेना है, और कीटोन ले रहे हैं तो सेम टाइप ऑफ कीटोन लेना है। तो इनमें क्या हो जाता है, टू मॉलिक्यूल्स में सेल्फ कंडेंसेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है, और प्रेजेंस क्या चाहिए इसके लिए, हमें एल्कली या हमें चाहिए एसिड और एल्कली की प्रेजेंस में। तो ये क्या देते हैं हमें, बीटा हाइड्रोक्सी। याद देंगे हमें ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देंगे, या देंगे ये हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, और जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है उसी को हम बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल। एंड जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा उसको बोलते हैं हम कीटोन। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस ऑल बाय रिएक्शन। तो ये हम वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आइदर हम लेंगे एल्डिहाइड और आइदर कीटोन, that will self undergo self condensation in the presence of acid or base and will form, if it is aldehyde then it will form beta hydroxyaldehyde, and if we have taken ketone that time it will give us beta hydroxyketone, and that beta hydroxyaldehyde is known as aldol and that beta hydroxyketone is known as ketone. Now I am explaining this by example. For example, here we have taken ethanol. Ethanol is CH3C double bond OH plus. This is one first example. This is ethanol, and it is reacting with same type of another molecule. As I told you, if we are taking aldehyde, then same type of molecule we have to take. Then this is hydrogen here, CH2 I am writing directly, and C double bond OH. In the presence of what we need? We need here dilute H2SO4 या फिर aqueous sodium hydroxide and name OH alkali. Then what it will give? क्या होगा? This is our hydrogen, this will shift to this oxygen, and here this is alpha hydrogen. Okay, let me explain first what is alpha hydrogen. This is functional group carbon. The carbon which is attached to functional group carbon is alpha carbon. Like ये है हमारा functional group वाला कार्बन, और इस कार्बन के साथ जो अटैच्ड कार्बन होगा अगला वाला, that is our alpha कार्बन, और इस कार्बन पे जो अटैच हाइड्रोजन होगा दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो कंडीशन क्या थी, इसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट विल गो। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। देन व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट हियर, इट विल गिव अस CH3 COH and CH2 CHO. Okay, this is a beta hydroxyaldehyde, but कौन सा एल्डिहाइड है ये,
butanol, butanol, butanol. Okay, and secondly we can call this 3-hydroxy butanol, butanol. This is the reaction with aldehyde. But when we take the another reaction that we are taking here with second reaction, we are taking here with ketone. Ketone we are taking here acetone, CH3 C double bond O CH3. अब यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन दोनों कार्बन के पास है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है. This is first of all I am writing this is acetone and this is a carbon containing functional group and उससे अगला वाला ये वाला कार्बन भी अल्फा है, ये वाला कार्बन भी अल्फा है और यहाँ पे हमें लेना है सेकंड मॉलिक्यूल भी सेम ही होना चाहिए. ओके, इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन तो यहाँ पे ये कार्बन भी अल्फा है, इसमें से हम किसी भी कार्बन को कहीं भी, बट प्रोडक्ट तो हमारा हर केस में सेम आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मींस इधर अगर इसको हम यहाँ से काट दें बीच में से ना तो इस कार्बन पे भी सेम ही, इस तरफ भी सेम ही वो आएंगे, हमारे एटम्स आएंगे इस तरफ भी सेम ही आएंगे. तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इस केस में हमारा प्रोडक्ट कोई भी कंडीशन हो सेम ही आएगा. तो यहाँ पे भी हम क्या ले रहे हैं, एक्वस NOH ले रहे हैं. तो यहाँ पे भी दिस हाइड्रोजन, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे ये भी हमारा अल्फा कार्बन है. तो दिस हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन विल शिफ्ट फ्रॉम here to there. So what it will form? It will form CH3 COH क्योंकि ये हाइड्रोजन अगर इस ऑक्सीजन पे जाएगा तो OH फॉर्म करेगा and CH3 इस पे है ही. and next as it is we have to write whatever I have left here and this will form this product. Okay, so I think this is clear now. And what should be the name here? This is a beta hydroxy or beta methyl pentanone because we have a 5 carbon here in the main principal chain, or we can say beta methyl we can write and pentanone, or we can say this is the common name and rest what we can write here 4-hydroxy 4-methyl pent-2-ol. This is the IUPAC name for this one. So we have completed this aldol condensation. क्या हो रहा है, हम ले रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड. Here we have taken aldehyde, here we have taken this ketone and the molecule containing alpha hydrogen. Alpha hydrogen is must here. Without this reaction will not take place. And reacting in the presence of base, either we have to take base or acid. So I have written both, but in slash that we have to take only one. In that case, क्या होगा, hydrogen will shift from here to one functional group oxygen. Okay, and it will form the aldol, or here it is ketone. Okay, I think up to here it is clear to all of you. Now I am taking the next thing. What is here? There is one condition. If we will heat this aldol or ketone, whatever it is forming here, then in that case what will happen? If we will heat this aldol, okay, we will heat this in the presence of acid, in the presence of H positive. Okay, then what will happen? It will give us alpha beta unsaturated rated aldehyde. Alpha beta unsaturated aldehyde. Okay, if we are taking here ketone, in that case what will happen? It will give us alpha beta unsaturated ketone. Okay, दिस इज द कंडीशन. क्या होगा अगर जो हमारा लास्ट में प्रोडक्ट बना था एल्डोल जिसको
बोला था मैंने और कीटोल जिसको बोला था, अगर उनको हम हीट करेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो वो क्या करेंगे, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। ओके, और वो क्या करेंगे हमें, या वो हमें देंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, एल्डोल होगा तो एल्डिहाइड देंगे, एंड अगर हमारा कीटोल होगा तो वो देंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोल। Okay, let me explain this by example. Okay, here we last time we have done this. This was our aldol. This was our aldol, CH2 CH2. Okay, this was our beta hydroxy butanol. Okay, now what will happen? एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एक यहाँ पे, एंड वी आर हीटिंग दिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दिस विल रिलीज द वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा, दिस ये हमारा अल्फा है। अब ये हो गया ना, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज दिस वन, देन दिस इज बीटा। ओके, दिस इज अल्फा कार्बन, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से नेक्स्ट वाली कार्बन अल्फा एंड उससे नेक्स्ट वाली बीटा। देन क्या हो जाएगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएगा, -H2O हो जाएगा, एंड रेस्ट वी आर लेफ्ट विद CH3 C डबल बॉन्ड C, one hydrogen is here, one is here, and CH2. ठीक है, and this is crotonaldehyde. The common name of this one is crotonaldehyde. Look, this is now alpha carbon, alpha beta unsaturated aldehyde. This will form alpha beta unsaturated aldehyde. And the same case happened with the ketol, and this was our aldol. Aldol से क्या बन गया हमारा आगे जाके protonal alpha beta unsaturated aldehyde. Now we will take ketone. Now we will take ketone, and ketol के केस में क्या होगा, we will take here CH3 C double bond O, sorry OH I am taking here, and here CH3 we are taking ketol, ketol, then here hydrogen, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन था, and this is C double bond O CH3. This was our ketol, and when we will heat it in the presence of H positive, तो ये भी क्या करेगा, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। ओके, एंड माइनस वाटर हो जाएगा यहाँ से, एंड क्या देगा ये हमें, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ये वाला एज इट इज लिख देना है नेक्स्ट, जो भी हमारे पास बच रहा है प्रोडक्ट में, एंड C डबल बॉन्ड O CH3. दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड। ओके, तो ये ऐसे अगर ये फिर से अगर हम प्रोडक्ट को हीट कर रहे हैं तो वो हमें क्या दे देगा, ये भी वही होगा अल्फा बीटा, क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से कार्बन अगले वाली होगी अल्फा, ये होगी बीटा, तो ये भी हो गया हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन।